हम लोगों ने ब्रीफ में ZigBee थोड़ा सा देखा था when we were studying about technologies of IoT, and we also saw the comparison of ZigBee with other protocols that are used in Internet of Things. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. So your syllabus basically includes ZigBee architecture, protocol and applications. एक ही टॉपिक है इसमें, so we'll be doing as much as possible in this. We're not going too much in depth in this topic, but yes, we have to at least understand what kind of architectures are possible in ZigBee and what layers your ZigBee model has. So starting with the specification, it is a high-level communication protocol that is used for creating personal area networks, PANs. So this is also for the same purpose. Important point here is it is built from small and low power digital radios, right? So one of the attractive points about ZigBee is its low power architecture and small devices. Second important point is it is based on IEEE 802.15.4 stack. If we talk about its range, low power consumption has, so yes, your range is slightly limited, of course, but you can get distances of 10 to 100 meters line of sight depending on the power output and the environmental characteristics. The higher end of this range, जो यहाँ पर 100 meters दे रखी है, it is directly not possible, of course. आपको 100 meters की line of sight ऐसे ही नहीं मिल जाएगी range, but yes, if you use some intermediate ZigBee routers in between, then you can achieve this line of sight easily. ZigBee devices can transmit data over long distances by passing data through a mesh network. So this is very important. So normal जो आपकी range रहेगी, you can extend that range easily by placing intermediate routers in between. जैसे आप अपने वाईफाई राउटर का जो स्ट्रेंथ होती है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है और रेंज होती है, उसको आप बढ़ाते हैं यूजिंग सम वाईफाई रेंज एक्सटेंडर. तो सेम वे में ZigBee डिवाइसेस के इंटरमीडिएट ZigBee डिवाइसेस एंड राउटर्स अवेलेबल हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ ZigBee डिवाइसेस. जो भी हमारा फ्रॉम एंड टू एंड ट्रांसमिशन होना है, फॉर दैट these intermediate routers can be used for extending the range. अभी हम उसका मॉडल भी देखेंगे. don't worry. ZigBee is typically used in low data rate applications. This is very important, that require long battery life and secure network. So ये सब जितने भी points यहाँ पर mentioned हैं, of course they are the features of ZigBee and these are some of the points that set them apart from the other technologies also. ये इसीलिए आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझने और उनका ध्यान रखना, especially for MCQs. Low data rate applications because its transfer rate is not very high like Wi-Fi or LAN. Long battery life हमें मिलेगी because these are low powered devices. इसमें थोड़ी range suffer होती है, but yes, low powered है and hence we'll have long battery life. And secure networking. So secure networking because it is going to create a personal area network of ZigBee devices only using this standard. So इसमें hack करना is comparatively tougher as compared to your normal Wi-Fi or internet hacking. That is why this is more secure. So it has a defined rate of around 250 kbps. So अगर आप उस rate को actually देखें तो काफी less है as compared to your Wi-Fi and internet standards. It's quite less. And that is why it is suited for low data rate applications and for intermittent data transmissions from a sensor or input device. So low data rate applications जहाँ पर बहुत ज़्यादा heavy data आपको communicate नहीं करना है over a period of time.
or you have some intermittent data transmission. Intermittent means which is not continuous. So say a sensor has to send some data to the main or master device, maybe every hour or every 2 hours or every 30 minutes. So वहाँ पर आपका एक continuous flow of data नहीं है, but you have an intermittent flow of data. कभी कभार आपको भेजना है या रिसीव करना है, and that too it's not a huge volume. So for such applications, Zigbee is free. So again, after looking at its features, you have to see your application कि किस टाइप की एप्लीकेशन हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कितना रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ट्रेड ऑफ्स हमें देखने पड़ेंगे बिटवीन योर कॉस्ट, पोर्टेबिलिटी, पावर कंजम्पशन, battery life, all these things you'll have to see. If and range also, right? Range and data range. So सारी चीजें consider करके if Zigbee is preferable, then Zigbee can be used for IoT networking as well. So talking about the architecture of Zigbee, Zigbee's system always has three different types of devices. ये कॉमन रहते हैं सारी Zigbee आर्किटेक्चर में. First is your Zigbee coordinator, a Zigbee router, and of course an end device. So हम इसको one by one अभी देखेंगे कि ये exactly क्या क्या करते हैं devices. So every Zigbee network must consist of at least one coordinator. एक ना एक coordinator होना mandatory है, which will act as a root and bridge of the network. So it is going to be the main or the focal point of your network and bridge, यानी ये सारी devices का coordinate करने में, communicate करने में जितनी भी हम Zigbee devices use कर रहे हैं, ये सारा coordinate करेगा काम. Coordinator is responsible for handling and storing the information while performing receiving and transmitting data operations. So this is the main function of the coordinator. Talking about routers, they are going to act as intermediary devices that permit data to pass to and flow through them to other devices. So basically ये आपके बीच में points रहेंगे which will allow data to pass to and fro through them. ये कुछ प्रोसेसिंग नहीं करेंगे ऐसे, ना ही ये आपके कोई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे या कुछ काम करेंगे. दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. एंड डिवाइसेस दे हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी इन द सेंस they can communicate with the parent nodes so that the battery power is safe. जो भी आपके end nodes हैं, end devices, so ये सिर्फ communication का काम करेंगे. यहाँ पे कुछ काम होगा और ये आपका डेटा या इंफॉर्मेशन भेजेंगे या रिसीव करेंगे. तो these are the end devices और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होगी या बहुत ज़्यादा काम या नहीं होगा because these are your devices that will be actually connected to some sensor or actuator. तो जितना काम इनको करना है वो उतना ही करेंगे. Rest of the configuration, rest all the settings will be handled by the coordinator. Number of routers, coordinators and end devices will depend on the type of networks such as star, tree and mesh networks. You must have come across these kind of networking topologies. So Zigbee network में भी क्योंकि हम लोग multiple routers, coordinators और end devices use कर रहे हैं, you can also have topologies like star, tree and mesh network. और कितने हमारे coordinators होंगे, कितने routers होने चाहिए, of course कितनी end devices हैं क्योंकि आपका कोई physical application implement कर रही है, so that will depend entirely on the topology, कितने हमें required होंगे. So यहाँ पर एक छोटा सा diagram है, so you will be able to understand better the different kinds of devices that exist in Zigbee architecture. So green जो आपका है, you can see it's a Zigbee coordinator. Then we have Zigbee routers here. So you can see Zigbee routers यहाँ पर बीच में दे रखे हैं. And Zigbee end devices are. So Zigbee end devices, orange colored Zigbee end devices. They are, some of the devices are here, some of the devices are even in between, and some of the devices are here. So if you can see end devices, main काम आपका application का end devices का है, and they are communicating to the
अदर एंड डिवाइसेस ऑब्वियसली सब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन या किसको क्या डेटा भेजना है, कहाँ भेजना है, ये आपकी डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे विद ईच अदर, बट देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन. Okay, so this is how you increase the range also in Zigbee. Suppose यहाँ पर एक जो terminal end pointer यहाँ पर है, इसको अगर data भेजना है, so direct communication would have been very difficult considering the Zigbee architecture and Zigbee protocol. But yes, through routers we are able to achieve that. So you can see here, ये आपका Zigbee main coordinator है, ये सारा coordinate करेगा. Data transmission, heavy processing, everything will be done by this coordinator. Routers will simply pass the information through them. अगर यहाँ से आपका data यहाँ जाना है, so it can pass like this, and then through here it can go to one of these nodes. So this is a kind of a network that will be created when we are using multiple Zigbee devices, multiple endpoints, multiple routers, and a Zigbee protocol. These are your links. So it is नॉट मैंडेटरी कि सारे राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो. कुछ आप चाहते हो कि इफ यू वांट अ पर्टिकुलर पाथ, देन ऑफ कोर्स यू कैन रिमूव सर्टेन राउटर्स कनेक्शन विद ईच अदर एज. से आपको लग रहा है कुछ रिडंडेंट है, कुछ अननेसेसरी है, और दे माइट नॉट बी रिक्वायर्ड, देन दे कैन बी रिमूव. और अगर ज़्यादा डेटा फ्लो होने का एक्सपेक्टेशन है, देन यू कैन ऐड मोर पाथ, जिससे अगर कोई पाथ ब्लॉक हो रहा है एट अ टाइम, देन an alternate path can be chosen, something like that. Okay, so it depends upon the application, the amount of data that is going to flow to the network. Normal जो हमारा network congestion के protocols होते हैं, network management के protocols होते हैं, they'll hold true. So this is an important diagram which explains the location and the functioning of every Zigbee device. एक पॉइंट मैं इसमें और बताना चाहता था कि दो दिस इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, मीनिंग जो एंड डिवाइसेस है दूसरे एंड डिवाइसेस से इसी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रही है, बट a Zigbee network can also be connected to the internet in case there has to be some sort of communication with some website या कोई HTTP protocol या कोई cloud communication अगर होना. So your coordinator device can also be connected to the internet. So in case some data has to be exchanged via the internet, so that can also be done, right? But yes, the internal part of this network, जो ये सारा communication हो रहा है, that has nothing to do with internet. वो अपना एक personal area network आपका created रहेगा. So of course, if there is no internet involved, अगर सिर्फ local area networking हो रही है इसी में, then it will be highly secure your network. If internet is involved, yes, थोड़ा सा उसमें security आपकी कम हो जाएगी because it will be susceptible to hacking, but still the internal part of Zigbee, it will be secure and it will be separate from the internet part because सारी devices directly internet access नहीं कर सकते. Only this coordinator can access internet. So yes, थोड़ा बहुत security यहाँ पर problem हो सकती है, but still the rest of the portion will be separated from your internet. Next, we have to look a little bit on the protocol stack. So why protocol stack is important? क्योंकि ये वाईफाई या इंटरनेट की तरह आपका TCP/IP प्रोटोकॉल नहीं यूज करता है. It uses a slightly different protocol. So इसकी प्रोटोकॉल में कितनी लेयर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये हमें पता होना चाहिए. So we are going to start with physical layer. So physical layer, you can see it is at the bottom. This layer, it does modulation and demodulation operations for transmitting or receiving signals respectively. This layer's operating frequency is 2.4 GHz, so frequency range जो operation की है वो same ही है, and it has 16 RF channels. It can have up to 16 radio frequency channels. Physical layer जैसे हम लोगों ने Bluetooth में भी देखा था, it is mostly responsible for getting raw data. यानी इसमें कुछ पैकेट्स, कुछ फ्रेम्स
डेटा क्या है, एरर करेक्टिंग या एरर कंट्रोल क्या है, दैट इज नॉट देयर. इट्स ओनली फिजिकल और रॉ डेटा. इसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशंस होते हैं एंड यू गेट द डेटा. So this is the physical layer at the bottom. Then we come to the MAC layer, medium access layer. अगर आप लोगों ने OSI इंटरनेट मॉडल या TCP/IP मॉडल पढ़ा है, so these layers are quite similar. They're not that different also, but yes, उतनी layers नहीं है इसमें और थोड़ा सा नाम different हो सकता है. That's it. So the MAC layer, it is responsible for reliable transmission of data by accessing different networks with carrier sense multiple access collision avoidance schemes. This also transmits the beacon frames for synchronizing communication. So MAC layer में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज फॉर रिलायबिलिटी. जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या जो डेटा रिसीव हो रहा है, क्या वो रिलायबली ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं, या जो जिसने रिसीव किया उसके पास प्रॉपरली वो डेटा पहुंचा जो ट्रांसमिट हुआ था या नहीं. सो इस लेयर में आपका एक तो CSMA बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिशन. मीनिंग अगर कुछ मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं, मल्टीपल मैसेजेस रिसीव कर रहा है रिसीवर, तो कोलिशन कैसे अवॉइड होना है. इसमें पता चला आपके पास 2-3 मैसेजेस आए और दोनों कोलाइड करके आपको ना ही इन इंडिविजुअल मैसेजेस का डेटा पता चला और जो कुछ डेटा मिला भी वो गार्बल्ड, एंड इट विल हैव एरर्स ऑब्वियसली. ठीक है. सो CSMA technique, that is carrier sense multiple access collision avoidance technique, which is a very common technique that is used in networks to avoid collision between different frames, that is implemented here. And apart from that, there are beacon frames available for synchronizing the communication. So what happens is जो data हमें मिलता है, जो भी हमारा मैसेज होता है, that is in physical form, but it is actually split up into different packets. तो suppose एक मैसेज है जिसको हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. Now if the transmitter is sending these packets or these frames, so it may happen कि 1 2 3 4 हमें इस ऑर्डर में चाहिए था, पहले 1 आ गया, 3 आ गया, 2 4, या 2 में कुछ एरर थी तो फिर उसको वापस भेजा गया. So they may arrive out of sequence also. So sequencing and synchronization is also an important part that is done by the MAC. Then coming to the network layer, so this layer, as the name suggests, it takes care of all network related operations such as network setup, device connection, disconnection from a network, routing, device configurations. All these tasks are taken care by the network layer. Then we have another sublayer जिसका नाम है APS, that is your application support sublayer. So this layer enables the services that are necessary for Zigbee device objects and application objects to interface with the network layers for data managing service. So ये basically services provide करती है for your Zigbee device objects. अभी हम देखेंगे what are Zigbee device objects, so that these objects and the applications they can interface or they can communicate with the network layer. जो भी डेटा नेटवर्क लेयर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करके आपका भेजेगी डेटा, सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरफेसिंग लेयर बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द NW. So this layer is responsible for matching the two devices according to their services and needs. Then there is an application framework. So application framework क्या है? It provides two types of data services as key value pair and generic message services. The generic message is a developer defined structure, whereas the key value pair is used for getting attributes within the application objects. तो आपका जो application framework है, it is all related to the application objects. Application objects are basically the endpoints जो कि आपके Zigbee सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो इनको कुछ सर्विस चाहिए होती है, इनका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है. सो एवरीथिंग इज डन इन द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. सब ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकता है.
So depending on that, the application framework configures or sets the functions of a particular application object for usage. So this will only deal with your endpoints and applications. That's it. इसमें और कुछ नहीं होता. Then if we talk about ZDO, जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, that is your Zigbee device object, जिसको हम शॉर्ट में ZDO कहते हैं. So basically, it is an interface between the application objects and the APS layer in Zigbee devices. It is responsible for detecting, initiating, and binding other devices to the network. So ये आपका जो object है, it is acting as an interface between these two things. ठीक है? ये आपका interface act कर रहा है between network layer and Zigbee device object and between the endpoints, that is your application objects and your APS layer. ये आपका interface है. जो भी डेटा आपके इस नेटवर्क में जाना है, so basically this is your main network, Zigbee network. जो भी एप्लीकेशन एंड पॉइंट आपका डेटा भेज रही है, रिसीव कर रही है, दैट इज सेंट टू दिस नेटवर्क थ्रू द ZTOs. या यहाँ से अगर कुछ डेटा आ रहा है तो इट विल बी सेंट थ्रू द ZTO टू द एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट्स.